Hello everyone. As you can see on the screen, in this class I will be explaining sentence and its parts. Okay? This class is especially for the students of class 10th. But it doesn't matter in which class you are studying. If you are preparing for any exam, any English exam, you can watch this video and you can improve your English. So let's start without taking the time. Sentence. You all are aware of a sentence. That what is a sentence, na? A group of words that follow the correct grammatical structure and have complete thought is called a sentence. And here are some points, and you all know the definition of sentence. The simple definition of sentence: a sentence is a group of words that has complete sense. So here are two points to be noted. A sentence always starts with capital letter and ends with full stop, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है जाकर फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पे या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ पार्ट्स ऑफ a sentence. So there are two parts of a sentence. It means we can divide a sentence in two parts, especially in two parts: subject and predicate. Subject part or subjective part, it tells who or what the sentence is about, and the predicate tells us something about the subject, what the subject does or what the subject is. Okay, सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है और प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है. ओके, सो लेट्स understand through the examples. So this is a sentence. It starts with capital letter and ends on the full stop. Okay, so subject or subjective part. Subject is she. What? Subject is she, and predicate is singing. Is singing. Okay, the next, the boys are playing football. So the boys, this is a subjective part or subject, are playing. This is an objective part or object. Oh, sorry, predicate. Okay, this is not an object. This is a predicative part or predicate. Now, she, subject always. So what is a subject? I have already told you. Now we will learn what can be subject. Okay, कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है. सब्जेक्ट is always a noun or a pronoun. Okay, a noun and pronoun can be considered a subject. Now pay attention on this table: subject and predicate. So here this sentence is in two parts. My younger brother is playing cricket. So here my younger brother is a subject and is playing cricket is a predicate. This boy was perfect in swimming. So this boy is subject and was perfect in swimming, predicate. Tommy plays football very well. Tommy is a subject
and plays football is a predicate part. They are busy in their work. So here, now brother is a noun and younger is an adjective, and here my is working as a determiner. So determiner, I'll explain the determiner in the next video because this is very important part for the sentence, because this is also a determiner. You can say this is demonstrative adjective, but also can be said determiner. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो सब्जेक्ट पार्ट है. प्रेडिकेट पार्ट हमेशा कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द वर्ब. फ्रॉम द वर्ब. फ्रॉम द वर्ब. वर्ब से पहले वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब से शुरू होकर लास्ट तक इट विल बी योर प्रेडिकेट पार्ट. ओके, दिस इज द इजी वे टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो वर्ब से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है, ये याद रखिए. ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्टिव पार्ट पहले होता है और प्रेडिकेटिव पार्ट पहले होता है और सब्जेक्टिव पार्ट बाद में होता है. ठीक है. नाउ सब्जेक्ट. टू बी अ सब्जेक्ट, a word must be noun or pronoun. ओके, कि एक सब्जेक्ट होने के लिए एक वर्ड को नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. एंड gerund and infinitive also work as noun. So these also can be said subject. I will explain what is gerund and what is an infinitive. तो gerund और infinitive भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन का काम करते हैं. ठीक है. तो नाउन, यू नो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. बट व्हेन आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन, दिस इज gerund. ओके. Gerund. Gerund is the ing form of the verb, works as a noun. तो क्या है? gerund जो verb की ing form होती है, but it does not work as verb, it works as a noun. ओके, तब ये verb का काम नहीं करेगी ing form, noun का काम करेगी. Now look at this sentence. Walking is a good habit. Swimming is my favorite sport. So here walking is a ing form of the verb, but it is working as a noun. So it can be said subject. क्योंकि यहाँ से देखिए हमारा क्या पार्ट शुरू होता है. दिस इज अ प्रेडिकेट पार्ट, और प्रेडिकेट पार्ट से पहले सब्जेक्ट पार्ट होता है. दिस इज ऑल्सो प्रेडिकेट पार्ट, दिस इज सब्जेक्ट. सो gerund also can work as a subject. ठीक है. जैसे कि वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है. हिंदी में ना, टहलना, खाना पीना. स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, तैरना मेरा फेवरेट स्पोर्ट है. ओके, जब ऐसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तब ये आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमारी सब्जेक्ट के रूप में काम करती है. एंड सब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता ये, फिर कि ये होगा नाउन. Infinitive. An infinitive is the base form of the verb preceded by to. It means when to is added with the base form of the verb. तो verb के base form के साथ जब to को add किया जाता है, it is called infinitive. To read. To read every day
is my favorite, is important for life. To fail is not the end of the life. Okay, to fail, this is the subject because is not the end of life. This is the predicate part, is very important for the life, predicate part. So here these highlighted words are इन्फिनेटिव, इट मीन्स रीड इज अ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उससे पहले किसका यूज किया गया, टू का। तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये किसका काम करते हैं, इन्फिनेटिव का काम करते हैं, इन्फिनेटिव वर्क एज अ नाउन।